to Medlectures with Dr. Gayatri. I am Dr. Gayatri and today we are going to focus on brachial plexus. Brachial plexus is a network of nerves which supply upper limb. The plexus consists of roots, trunks, divisions, cords and branches. These are the roots, these are trunks, these are divisions, cords and nerves or branches. हम अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे. First, we will see how roots are formed. This is the transverse section of spinal cord. It has white and grey matter in it. This is the horn. ये बाहर जाके फॉर्म करते हैं. Posterior root, posterior nerve root, and anterior nerve root. And they combine and form spinal nerve. They further get divided into posterior or dorsal ramus and anterior or ventral ramus. So, roots are constituted by anterior primary rami of spinal nerve C5, C6, C7, C8 and T1. Now, we will study the schematic presentation. जैसे हमने कहा था कि ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या क्या है, रूट्स है C5, C6, C7, C8 and T1. Then roots, then trunks, division, cord and branches that are nerves. So कैसे याद रखेंगे? RTDCB, RTDCB. C5, C6 ये फॉर्म करता है अपर ट्रंक. C7 फॉर्म करता है मिडल ट्रंक. C8 and T1 फॉर्म करता है लोअर ट्रंक. Now each trunk is divided into anterior division and posterior division. Each upper, middle and lower trunk divided into anterior or ventral division and posterior or dorsal division. Then जो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है और मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, उससे फॉर्म होता है लैटरल कॉर्ड. देन अपर, मिडल एंड लोअर तीनों का जो पोस्टेरियर डिवीजन है, ये तीन पोस्टेरियर डिवीजन मिला के होता है पोस्टेरियर कॉर्ड. एंड लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन सिंगल फॉर्म करता है मेडियल कॉर्ड. देन ये तीनों कॉर्ड के आगे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, दैट इज नर्व्स. सो हम पहले सीखते हैं इसके निमोनिक्स. फर्स्ट लैटरल कॉर्ड का निमोनिक है LML. पोस्टेरियर कॉर्ड के ब्रांचेस का निमोनिक है अल्ट्रा. एंड मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस का निमोनिक है 4MU. देर आर 4M and 1U. नाउ लेट्स सी ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स. तो हमने तीन कॉर्ड्स देखे थे, लैटरल कॉर्ड, पोस्टेरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड. लैटरल कॉर्ड के ब्रांचेस है LML निमोनिक है लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. पोस्टेरियर कॉर्ड का निमोनिक है अल्ट्रा. अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व. देन मेडियल कॉर्ड के निमोनिक है 4MU. मेडियल पेक्टोरल, मेडियल सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, medial cutaneous nerve of arm, medial root of median nerve,
ulnar nerve or medial nerve. Don't get confused in between medial and median nerve. The medial cord has medial root of median nerve and lateral cord has lateral root of median nerve. So they both forms the median nerve. And the lateral cord has lateral pectoral nerve, medial cord has medial pectoral nerve. So these are mnemonic LML, ultra and 4MU. Now branches of roots. The roots were C4, C5, C6, C7, C8 and T1. C5 root has branch phrenic nerve. Then one more branch of C5 root is dorsal scapular nerve. Then roots C5, C6, C7 give branch. The nerve is long thoracic nerve. And one more nerve, that is nerve to serratus anterior, which has also root C5, C6, C7. So branches of root are phrenic nerve, dorsal scapular nerve, long thoracic nerve, nerve to serratus anterior. Now branches of trunk. As we know, roots C5, C6, C7, C8, T1. C5 and C6 join to form upper trunk. C7 form middle trunk. C8 and T1 form lower trunk. Branches of trunk arise only from upper trunk, which gives two branches. First branch is called subscapular nerve. And also another branch is nerve to subclavius. So जो ब्रांचेस है ट्रंक की वो सिर्फ अपर ट्रंक से अराइज होती है, जिसमें दो ब्रांचेस है सबस्कैपुलर, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस. These are the two branches of trunk. Upper trunk. Now let's see how to draw diagram of brachial plexus. These are root C5, C6, C7, C8 and T1. C5, C6 join to form upper trunk. This is the upper trunk. C7 form middle trunk. C8 and T1 form lower trunk. Upper, middle and lower trunk. Then each trunk is divided into anterior and posterior division. So this is the anterior division of upper trunk. This is the posterior division of upper trunk. And these are divisions. This is anterior division of middle trunk and posterior divisions of middle trunk. Then this is anterior division of lower trunk, posterior division of lower trunk. So upper, middle and lower is divided into anterior and posterior division. Anterior, posterior, middle, anterior, posterior and lower, anterior and posterior. Then anterior division of upper trunk and anterior division of middle trunk forms the lateral cord. Then posterior division of upper, middle and lower, all three posterior division form posterior cord. And anterior division of lower trunk forms the
medial cord. Then let's see the branches of roots, that is nerves of roots. Branches of roots. From C5 there is branch of phrenic nerve. Then from C5, C6, C7 there is a long thoracic nerve. So branches of roots are branch of phrenic, long thoracic and serratus anterior. Then branches of trunk are suprascapular nerve and nerve to subclavius. There are two branches of trunk, suprascapular, nerve to subclavius. Then branch of phrenic and long thoracic nerve. And branches of trunk, suprascapular and nerve to subclavius. Then branches of cords. Lateral cord branches, how we remember? LML, that is lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve, and lateral root of median nerve. Don't get confused with medial nerve. It is lateral root of median nerve. Then posterior cord branches ultra. It is the mnemonic. First is the upper subscapular, then lower subscapular, then thoracodorsal, also called as nerve to latissimus dorsi or thoracodorsal. Then axillary nerve, and one remaining is radial nerve. The mnemonic is ultra. This is the radial nerve. So posterior cord has 5 branches ultra. Then medial cord has 5 branches which are 4MU. फर्स्ट इज मेडियल पेक्टोरल नर्व. जैसे कि हमने देखा था लैटरल कॉर्ड में लैटरल पेक्टोरल नर्व है, यहाँ मेडियल कॉर्ड पे मेडियल पेक्टोरल नर्व है. देन मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म and medial cutaneous nerve of forearm. This is the ulnar nerve. And one more is there. Which is the medial root of median nerve. जैसे हमने देखा था लैटरल कॉर्ड में लैटरल रूट है मेडियन नर्व का, यहाँ पे मेडियल रूट है मेडियन नर्व का, और वो दोनों फॉर्म करते हैं मेडियन नर्व. तक हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीखा. अब हम इसको रिवाइज करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था रूट्स. These are constituted by the anterior primary rami of spinal nerve C5, C6, C7, C8 and T1. जैसे हमने पहले वाले डायग्राम्स में देखा था. अब हम ये जो डायग्राम है बुक का उसमें स्टडी करेंगे. These are roots C5, C6, C7, C8 and T1 and these are anterior primary rami of spinal nerves. Then trunk. Root of C5 and C6 join to form the upper trunk. Let's focus on this diagram. The root of C5 and C6 join to form upper trunk. Then C7 forms the middle trunk and C8 and T1 form the lower trunk. Then divisions of the trunk. These are upper, middle and lower trunk. Now each trunk divide into ventral or anterior and dorsal or posterior division, which supply the anterior and posterior aspect of the limb. Now see, this is upper trunk. This is the anterior division of the upper trunk in green, and in yellow this is the posterior division of upper trunk. Then this is middle trunk. The green is anterior division of middle trunk and yellow is posterior division of middle trunk. Then this is lower trunk.
The green is anterior division of lower trunk and the yellow is posterior division of lower trunk. So anterior, anterior, posterior, and here is anterior and posterior. These are the divisions of the trunk. Now let's study about chords. The lateral chord. For we have seen about anterior and posterior divisions. First, the lateral chord. This is the lateral chord. It is formed by the union of ventral division of the upper and middle trunk. Don't get confused in anterior or ventral. First, this is anterior division of the upper trunk and anterior division of middle trunk. So these form the lateral chord. Then the posterior division of all trunk, that is, this is posterior division of upper trunk, this is posterior division of middle trunk, and this is posterior division of lower trunk. It forms the posterior chord, and the medial chord is formed by anterior division of lower trunk alone. Now, branches. First, we will study branches of roots. These are roots C5, C6, C7, C8, and T1. So roots are, first is nerve to serratus anterior, also called as long thoracic nerve, which formed by C5, C6 and C7. हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे लॉन्ग थोरेसिक नर्व फॉर्म होती है C5, C6 और C7 रूट से. देन डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5 से फॉर्म होती है और ब्रांच ऑफ फ्रेनिक भी C5 से है. देन the branch of the trunk. These are trunk, upper, middle and lower. We have seen these arises only from the upper trunk. सिर्फ upper trunk से दो branches है. First है suprascapular nerve और एक है nerve to subclavius. So हमने इसमें क्या देखा? ये है roots में branch of phrenic है. Then हमने क्या देखा? लॉन्ग thoracic nerve है C5, C6 और C7 से. एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रंक में ओनली जो अपर ट्रंक है, ये अपर ट्रंक जो है वही सिर्फ दो ब्रांचेस देता है. फर्स्ट है सुप्रास्कैपुलर नर्व और जो एक है वो है नर्व टू सबक्लेवियस से दो ब्रांच. सी ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स हमने देखे थे. थ्री कॉर्ड्स है, लैटरल कॉर्ड, पोस्टेरियर कॉर्ड और मिडियल कॉर्ड थे. तो पहले हम ब्रांचेस देखेंगे लैटरल कॉर्ड के. Lateral cord के branches का mnemonic क्या था? LML. So first is lateral pectoral nerve, second is musculocutaneous nerve, and third is axillary nerve. See in this diagram. This is lateral pectoral nerve. This is musculocutaneous nerve, and this is the lateral root of median nerve. So this is lateral root of, here is lateral root of median nerve. See red underline. Lateral pectoral, musculocutaneous and lateral root of median nerve. Now the branches of posterior cord. इसका निमोनिक क्या था? अल्ट्रा. फर्स्ट जो है वो है अपर सबस्कैपुलर नर्व, देन है लोअर सबस्कैपुलर नर्व. ओके, अल्ट्रा. सो थर्ड इज नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सा, जिसको हम थोरैकोडॉर्सल नर्व भी कहते हैं. फोर्थ है रेडियल नर्व और फिफ्थ है एक्सिलरी नर्व. Now in diagram, see here. This is the posterior cord and these are branches. First is upper subscapular, then lower subscapular, then thoracodorsal nerve, then radial nerve. This is radial nerve and this is axillary nerve. Then the branches of posterior medial cord. This is the medial cord. So branches are, the mnemonic is 4MU. This is the medial pectoral nerve.
medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, ulnar nerve, and one is the medial root of median nerve. देखो ये डायग्राम में, तो ये है medial cord और इसके branches हैं 4MU, that is medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm. ये जो है ulnar nerve है. Then यहाँ जो nerve है उसकी एक जो ब्रांच है medial cord की वो है medial root of median nerve. तो कैसे याद रखेंगे? तो cord जो upper cord थी या हम कह सकते लैटरल कॉर्ड थी, उसमें था लैटरल पेक्टोरल नर्व, मीडियल में है मीडियल पेक्टोरल नर्व. जो लैटरल कॉर्ड था उसकी ब्रांच थी लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जो मीडियल कॉर्ड है उसकी ब्रांच है मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व. इस तरह से हम याद रखेंगे. देखा ब्रेकियल प्लेक्सस का. अब हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी. सो फर्स्ट उसमें एस्पेक्ट है ऑप्स पैरालिसिस, ये डिसीज है. तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्स पॉइंट क्या है. हमने देखा था रूट्स रहते हैं C5 C6, ठीक है. दोनों को मिलके होता है अपर ट्रंक, ये है अपर ट्रंक, और जो कि डिवाइड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में. सो जो अपर ट्रंक है उसकी दो ब्रांचेस रहती है, एक है सबस्कैपुलर नर्व और एक थी नर्व टू सबक्लेवियस. सो ये सबको मिला के जो ये पॉइंट है उसको कहते हैं ऑप्स पॉइंट. सो ऑप्स पॉइंट में मेनली इंक्लूड है C5 C6. देन क्या क्या इंक्लूड है और सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, anterior division of upper trunk and posterior division of upper trunk, ये सब included है. Then site of injury. One region of the upper trunk of the brachial plexus is called Erb's point. 6 nerve meet here. Injury to the upper trunk causes Erb's paralysis. So जब ये Erb's point को इंजुरी होता है तो इसे हम कहते हैं Erb's paralysis. upper trunk को जब इंजुरी होती है तब क्या causes है इंजुरी के? Undue separation of the head from the shoulder, which is commonly encountered in the following. जब सेपरेशन हो जाता है हेड का शोल्डर से, जैसे कि बर्थ इंजुरी है, जब शोल्डर पे फॉल होते तब, ड्यूरिंग एनेस्थेशिया. सो ये कॉजेस है ऑफ पैरालिसिस के. मेनली नर्व रूट इन्वॉल्व कौन सा है? मेनली C5 एंड पार्टली C6. सो ये है C5 एंड C6. मसल पैरालाइज, कौन से मसल पैरालाइज है? बाइसेप ब्रेका, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस. Partly supraspinatus, infraspinatus and supinator. Then C abduction के लिए रूट C5 रिस्पॉन्सिबल है, फ्लेक्जन के लिए C5 C6, एक्सटेंशन के लिए C7. सो ऑफ पाल्सी में C5 और C6 ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए एबडक्शन यानी कि जो बॉडी पार्ट है वो दूर ले जाना, ठीक है, मेडियल प्लेन से दूर ले जाना, ये होता है एबडक्शन. और फ्लेक्शन, ये दोनों जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं. डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ द लिम्ब आर्म. क्या डिफॉर्मिटी होती है? हैंग, जो आर्म है वो हैंग होता है साइड में और एडक्टेड होता है, यानी कि मेडियल प्लेन या बॉडी से नजदीक होता है, ये डायग्राम में दिखा है वैसे. एंड मीडियली रोटेट होता है. और जो फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड होता है एंड प्रोनेटेड होता है. ये जो डिफॉर्मिटी है इसको क्या कहते हैं? पुलिसमैन टिप हैंड और वेटर स्टिप हैंड और पोर्टर स्टिप हैंड कहते हैं. डिसेबिलिटी क्या क्या होती है? द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर लॉस्ट. एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, जैसे कि हमने बोला एबडक्शन नहीं हो पा रहा है, फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन नहीं हो रहा है, biceps and supinator jerks are lost, sensation are lost over a small area over the lower part of the deltoid. So loss of sensation भी है. Then say in this diagram, this is upper arm, the there is adduction and medial rotation. As we saw, there is muscle atrophy, and this is known as waiter tips or porter tips hand deformity of wrist.
mainly C5 and C6 nerve root are damaged in Erb's paralysis. पैरालिसिस में और एक चीज याद रखेंगे हम कि आर्म जो है साइड में हैंग करता है, एबडक्टेड नहीं है, एडक्टेड है और रोटेटेड है मीडियली, एंड जो फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड है एंड प्रोनेटेड है. देन नाउ वी विल सी क्लम्पके's पैरालिसिस. साइट ऑफ इंजरी क्या है? लोअर ट्रंक है ब्रेकियल प्लेक्सस की. क्या कॉजेस है इंजुरी के? अनड्यू एबडक्शन ऑफ द आर्म एज इन क्लचिंग something with the hand after a fall from height or sometimes in birth injury. So birth injury और जब हाइट से गिरता है कोई तब एबडक्शन होता है आर्म का, तो उसके वजह से क्लम्पके's पैरालिसिस होता है. Nerve root involved are mainly T1 and partly C8. So C8 and T1 lower जो हमने देखा था लोअर ट्रंक वो इन्वॉल्व है. मसल पैरालाइज. इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड and ulnar flexor of the wrist and fingers. These muscles are paralyzed. Deformity and position of hand क्या है? So Klumpke's paralysis में claw hand ये डिफॉर्मिटी है. एमसीक्यू भी पूछा जाता है क्लॉ हैंड किस में है, तो क्लम्पके's पैरालिसिस में है. So now what is claw hand? Claw hand due to unopposed action of the long flexor and extensor of the finger. In a claw hand there is hyperextension at the metacarpophalangeal joint and flexure at the interphalangeal joint. अब हम देखेंगे कि हाइपर एक्सटेंशन क्लॉ हैंड कैसे बोला उन्होंने. पहला थिंग क्या बोला है? हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. सो दीज आर मेटाकार्पल, okay, and these are phalanges. So metacarpophalangeal joint are hyperextended. So like this way it is hyperextended. And flexion at interphalangeal joint. So these are phalanges. This is the interphalangeal joint. So these are flexion. Okay. So like this deformity is there. Okay. There is hyperextension at metacarpophalangeal joint and like this interphalangeal joint is flexion at interphalangeal joint. Okay, like see in this diagram, this is metacarpophalangeal joints, these are hyperextended, whereas these are interphalangeal joint, there is flexion. So this is the claw hand which is seen is Klumpke's paralysis. And disability, complete claw hand जैसे कि हमने देखा था, cutaneous anesthesia and analgesia in narrow zone along with the ulnar border of forearm and hand. Now what is Horner syndrome? If T1 is injured proximal to white ramus communicants to first thoracic sympathetic ganglion, so T1 जो है उसको इंजरी हो जाती है, जहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है, एसोसिएटेड क्या होता है, तो टोसिस, मायोसिस, अल्हाइड्रोसिस, एनोप्थाल्मस, loss of ciliary spinal reflex associated होता है. So this is because of injury to the sympathetic fiber to the head and neck that leaves the spinal cord through nerve T1. So T1 को इंजरी होती है मेनली हॉर्नर सिंड्रोम में. मायोसिस जो है उसमें क्या है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. ओके, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होता है जो आईज में प्यूपिल है उसका. तो T1 सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो सप्लाई करते हैं डायलेटर प्यूपिली मसल को. सो इट विल नॉट वर्क एंड दिस स्फिंक्टर पापिली बिकम मोर पावरफुल. Now the vasomotor changes. The skin area with sensory loss warm हो जाते हैं. क्यों? Arteriolar dilatation होता है इसके वजह से, और loss of sympathetic activity के वजह से जो है there is absence of sweating. Then tropic changes. Long-standing cases of paralysis leads to dry and scaly skin. Nails crack हो जाते हैं easily with the atrophy of pulp of finger. So I hope you understand whole chapter what we learned in today's lecture of brachial plexus, its anatomy, clinical anatomy, Erb's paralysis, Klumpke's paralysis. So like, share and subscribe. Thanks for watching. Keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you.